Bismillahirrahmanirrahim. Now, discussing the measurement of charge on an electron, and that method is called as the Millikan's oil drop method. In the year 1909, Millikan ने charge on an electron को determine किया by a very simple experiment. Now, first of all, discuss the apparatus used for that experiment. हम अपने discussion को दो points में divide कर देते हैं, construction and working. First of all, let's discuss the construction of this apparatus. This apparatus consists of a metallic chamber. It has two parts, and this chamber is filled with air, and the pressure of that air can be adjusted by the help of the vacuum pump. हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो electrodes मौजूद हैं, the positively charged electrode and the negatively charged electrode. एक को हम कह देते हैं plate A and the other one as A dash. इन electrodes की मदद से we can generate the electric field in the space between the two plates. याद रहे कि ये जो upper plate है जिसको हमने plate A कहा, it has a small hole in it. Along with that, we have an atomizer. Atomizer का काम है एक fine spray of oil droplets create करना, which we can see in the figure. Now, whatever is going on between these two plates can be observed through this telescope. Now, coming to the working of this apparatus. जैसा कि हमने देखा that upper plate, the A plate, has a small hole in it. जैसे ही atomizer की मदद से a fine spray of oil droplet is created. Now, as we know that air is filled between these two plates, this oil droplet can fall from this small tiny hole. तो पहले तो बात करते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तब क्या होगा. This droplet which falls between these two plates when illuminated perpendicular to the direction of view appears in the telescope as a bright speck, as we have a dark background in this metallic chamber. ये जो oil droplet है ये fall करेगा under the force of gravity क्योंकि हमने अभी कोई भी electric field apply नहीं की. So, the velocity of this oil droplet will totally depend upon its weight. And we can say that this can be shown as V is proportional to mg. यहाँ पे m है mass of the oil droplet, whereas this small g is actually the acceleration due to gravity. क्योंकि in the first part of the experiment कोई electric field मौजूद नहीं है, then this oil droplet will fall just under the force of gravity and its velocity can be shown by this relationship. Now let's come to the second part of the experiment. As the air is present between these two electrodes, हम इस air को X-rays की मदद से ionize कर देते हैं. जब हम इस oil droplet को X-ray की मदद से ionize कर देंगे तो actually होगा ये कि these oil droplet will take up an electron और इस electron को लेने की वजह से अब oil droplet हमारे पास एक charge particle का काम कर रहा है. अब जब हम इस plate A और A dash को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में मूव करेगा. द स्ट्रेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय E, कैपिटल E, whereas small e is used to show the charge on the electron. So, now the velocity can be shown as, in this equation, the capital E is actually the strength of the electric field. The small e is actually the charge on the electron क्योंकि हमने उस oil droplet को
चार्ज कर दिया बाय यूजिंग द एक्स रेज, और जब वो आयनाइज हो गया, उस पे चार्ज आ गया, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव बाय हैविंग दिस चार्ज ऑन इट, और अब उसकी वेलोसिटी हम शो कर रहे हैं बाय दिस इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमने उसके चार्ज यानी E को भी इंक्लूड किया और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड जो हमने प्लेट्स A और A डैश के दरमियान जेनरेट की है, कैपिटल E से हमने इसको शो किया. Now we are dividing the two equations. V1 over V2 will be equal to mg over capital E into small e minus mg. Now this capital E into small e is actually the upward driving force on the droplet. ये अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स क्यों आई है? ये अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स आई है क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी. हमने अपने एक्सपेरिमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, देन द पार्टिकल, द ऑयल ड्रॉपलेट वाज फॉलिंग जस्ट अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी. लेकिन जब हमने प्लेट ए और ए डैश के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, चार्ज्ड पार्टिकल was now having an upward driving force because of that electric field. Now the values of V1 and V2 can be recorded with the help of the telescope attached. जबकि factor G and the capital E are known to us. E is the strength of the electric field. This G is the acceleration due to gravity. Mass of electron मालूम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे दैट द ऑयल ड्रॉपलेट शुड बी सस्पेंडेड इन द चैम्बर. जब वो ऑयल ड्रॉपलेट बिटवीन द टू प्लेट सस्पेंडेड हो जाएगा तो हम आसानी से उसका मास डिटरमिन कर सकते हैं, एंड हेंस वी कैन कैलकुलेट द E, दैट इज द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट. अब मेलिकन ने क्या किया कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर करके बार बार चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट को डिटरमिन किया. जब उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया, द स्मॉलेस्ट चार्ज विच ही फाउंड वाज 1.59 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. This was the smallest charge which was found by Millikan on the oil droplet. ये वैल्यू जो अब हमारे पास recent latest determined value है, इसके बहुत ही क्लोज है, and the recent value for the charge on an electron is 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, and we can see that this value is very close to the value that was found by Millikan on the oil droplet. वो value 1.59 into 10 raised to the power minus 19 थी. ये smallest value थी जो Millikan ने एक charged oil droplet पे determine की. अगर ऑयल ड्रॉपलेट पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते यानी डबल चार्ज हो जाता, 3 होते तो ट्रिपल अमाउंट का चार्ज हो जाता, लेकिन this value 1.59 into 10 raised to the power minus 19 coulomb was found by Millikan as the smallest value of charge on the oil droplet. और देखा ये गया है कि it is close to the recent determined value which is 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. याद रहे कि this charge present on an electron is the smallest charge of electricity that has been measured so far. So we have finalized the charge on an electron, that is 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now let's see how we can determine the mass of electron. Now let's determine the mass of electron by using the values of E over m value of an electron and the charge on an electron. As we have recently determined that E is 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, whereas J.J. Thomson has determined the E over m value of an electron, and that was 1.7588 into 10 raised to the power 11 coulombs per kg. So E over m will be equal to 1.6022 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, that is the charge, divided by the mass of electron. And we know that E over m is equal to 1.7588 into 10 raised to the power 11 coulombs per kg. So
From this, the mass of electron will be equal to, that is the charge 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulombs divided by E over m value जो कि है 1.7588 into 10 raised to power 11 coulombs per kg. सिर्फ हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया and the answer comes out to be 9.1095 into 10 raised to the power minus 31 kg, which is the mass of an electron, a very important value.